professionals like medical doctors, dentists, pharmacists, nurses, lab technicians. So anyone looking to migrate to Australia. So there is some common steps you need to complete. For example, like document verification and then English test, or then your on the subject test. For example, AMC for medical doctor, ADC for dentist, that kind of things. Okay, so we prepare for you all these exam and help you to complete this documentation process. So easily you can migrate from your home country to Australia. This is a little bit about myself. So myself is a pharmacist from India. I did my bachelor's, master's, and PhD from University of Sydney in Australia. I'm basically clinical pharmacology and public health researcher, and around 10 years of teaching experience in India, Malaysia, and Australia. These are some of the faculties for this course. This is Dr. Sipnil Sharma. She is an Indian MD doctor, and she passed this AMC journey, and she's living and practicing in Australia. And same for Dr. Udara. She's also living and working here in Sydney. She's also Dr. Manukal MBBS MD. So we are the faculties for AMC course. So what are the opportunities for medical doctors to migrate to Australia? Why you need to migrate? Why you think about to migrate to Australia? Especially most of the doctors, they think about only the USMLE and PLAB. Many of them are not aware and they don't know the opportunities in Australia for medical doctors. Okay, so if you see here, this is from one of the number one website in Australia. This is called basically this is basically called seek.com.au. So here you can do sorry guys. So the salary is basically very, very high, 380 to 400,000 yearly you can earn as a GP in Australia. You can earn, okay? And there is a AMA, Australian Medical Association, recently published an article and they are saying they need 10,600 GPs by 2031. So there is a high demand for medical doctors in Australia. And if you see, the Australia provide a permanent visa, PR visa for all professionals, but including the health professionals are in the critical shortage list. So you will get the visa in very, very short time. Okay, and a lot of vacancies are available right now, and the salary is very, very high for medical doctors in Australia. If you calculate the salary for a medical doctor, so even if you just pass AMC Part 1, you are not a fully registered RMP in Australia, still you will get at least salary like 80 to 120,000 Australian dollars per year. But while you are working as a junior medical officer, resident medical officer, once you completed AMC, multiple choice questions, Australian Medical Council exam from your home country, then you can come on this here on work visa, and later on you can convert it to the you can write AMC2 and all those things. Okay, so here the GP, how much they can and how they calculate basically the salary for GP in Australia or a general doctor. So basically, a doctor they charge $21 to $250 per patient. Okay, this is like minimum to maximum per patient as a GP they can charge to the customer or a patient. Okay, and on an average, a maximum patient a GP can see a 60 patient per day in Australia. This is regulations here. So on an average, you see like if normal person is working around 5 days, 8 hours per day, and 40 hours weekly if you are working. And on an average, if you think that if you are seeing that 40 patient per day, 40 patient basically they see on an average. I met many doctors, so like 20 in the morning, 20 in the evening, so they see like this for 40 patient per day. And if we calculate like $30 they are charging on an average, because this money based on the procedure what you are performing, it's just a just coming routine checkup, all those things, then you will charge you $21. But someone is coming for some procedure, you might need to charge $50, $100, $20, something like this. Okay, so if we calculate this calculation, and you can earn basically a 1,200 minimum like per day. And if I calculate all those things like yearly, it's going to be
monthly around 12 to 13 lakh Indian rupees. So basically here, maximum patient you can see 60 per day, and minimum you need to charge 21 to $250. Okay, so you can see how much money as a GP can earn. And on an average, if you see here, only after AMC Part 1, you pass and get a job, the salary will be this much. That is resident medical officer job. This is the latest figure from this. And another thing that if you this is like a normal day, like you are working 9 to 5, Monday to Friday. But if you are working Saturday or after hours, means after 6 p.m. if you are working, your salary is going to be 1.5x. Or if you are working on Sunday or any public holiday, then your salary is going to be 2x. Okay, so I know personally some doctors, they prefer to go at least for Saturday or Sunday at least one day, and they take a week off in the weekdays to earn more money. And the several other benefits for medical doctors who migrate to Australia: high potential early learning, as I mentioned earlier. Apart from this, the kids' education is free in Australia, and also healthcare access free. If anything happened to you or in your family, so the healthcare in Australia, okay, and professional development. If you want to do any workshop you want to attend, any online course you want to do, or anything you want to learn something, the hospital will pay basically the fees for that. And work-life balance, basically, as I mentioned earlier, for doctors, you need to work on an average 8 hours per day, okay, and 40 hours weekly. So you have a lot of time to give your family, just like a very easily, I can say, very good work-life balance in Australia. And career opportunities, I can see there's a very high demand for medical professionals, and you will get the fast-track PR visa. And quality of life, obviously, is very high compared to our own countries. And excellent healthcare here, diverse culture. A lot of countries people are migrating to Australia, making an attractive destination for many people to think that to migrate to Australia. So these are the steps basically you need to complete in order to migrate to Australia. So first step is just a document verification. We will help you to complete this process. It's very, very easy process. You just need to give your scan copy of your documents. Okay, so no need to worry. This basically there is a two-step epic verification or AMC photo. Might be some of you from India, and there is a one news last week that NMC has signed one MOU, and for that now you can migrate to Australia and Canada or US. So in that case only, this epic verification not needed after the implementation. Rest of the things you have to do again. You need AMC portfolio, again you need this part and all this the same. Only the part one might be removed, or we can like $230 you may save. Okay, so many people think that once this regulation is going to implement in future, and then there is no need to write the AMC exam. Still you need to write this AMC exam for Australia or for US Assembly for US. Okay, so this step will help you to complete, and then there is a exams you need to write: AMC examination, Australian Medical Council MCQ examination. We will provide you the 4-month coaching, online coaching. And then this 4 months is more than enough for you. If you can study 4 hours per day for 4 months, definitely you can crack this exam in your first attempt. Okay. And then after that, you also need to pass the English test. We will provide you coaching for this as well, PT, OET, or IELTS, whatever you want. And after these 3 steps, you can complete from your home country. Okay. These 3 steps you can complete in your home country. Then you are eligible to apply as a GMO or RMO. So what is the difference in GMO or RMO? Those are very fresher. They just did MBBS and do not have any experience, zero experience. They might need to apply for GMO or RMO, maybe, like RMO also there is some category 1, 2, 3. They might be give like, the minimum one. So you can apply basically both. But someone have like some experience, like after 6 months, if you are working up to MBBS, or some already did like MD or MS, in that case, you will go for definitely for RMO.
So there is a some categorization that there is a minimum supervision need basically in the RMO, but GMO you have to work under a someone will be supervised for you to perform all these procedures. Okay. So you can come on this visa and then can write the part two. But so many doctors basically afraid that EMC part two very tough exam, and is there any alternate for AMC two? So yes, there is an alternate called WBA, work-based assessment, or assessment. This is really easy, and there is 19 hospitals currently offering this program. So you can apply, complete these three steps. I will take your all questions after this conversation. I'm just explaining thing to thing. Then you can ask me any questions. Just give me 10 more minutes. And meantime, you can give us your name, phone number, email in the chat box. So we will connect to you also. Okay. So here, once you complete these three steps, you have to go to AMC2. So you can come on this visa and come here work, and simultaneously you can prepare for AMC2 and you can do. Directly you can apply working here in this 19 hospital if you are working as a GM or RMO. So very easy to get WBA for you, okay? And then you will get a full registration, and then you can get full registration in Australia. Then you can apply basically the PR visa. And this is a WBA program, so you can see here what a requirement they are asking. So they are saying that you have to be first, you have to apply the job. So if you pass AMC plus English, then you have to start looking job and got any job for 12 months this contract, and then you have to apply for this. Okay, this basically just asking that MCQ AMC part 1 you pass and English, that's it, and you are eligible to apply basically. That's what they are saying. This is basically Government of Western Australia. Currently they open there's a vacancies are available. There's a job opening is here. So those are already completed this AMC part 1, they are eligible to apply. Yeah. तो इसमें क्या है, जस्ट सिंपली आपको AMC part 1 प्लस इंग्लिश पास करना है एंड जॉब को अप्लाई करना है, and once you got job, then you can go for WBA program. So these are some of the links here. So basically you can see a lot of jobs available in the government websites as a junior medical officer or resident medical officer or WBA program. So you can find a lot of information. This our team will give you this presentation if you want, or all these links to you. So please provide us your phone number, email in the chat box, especially this provide with your country code, so we will connect to you. And AMC is very convenient for you. They connected yearly 10 times. Okay. If I compare like PLAB, you have to book around 1.5 years in advance to get the seat. Very difficult in that. So for AMC, whenever you are ready, you are confident, you just can book your exam and you can sit in the exam. And there are currently 15 exam centers in India, so very easy to get seat whenever you want. You can go for this exam, AMC. So English, we need 7 individual band in IELTS or 65 in OET, or PT or B in OET. So these are the documents required for skill assessment or document verification, like your degree, transcript, work experience if you have any, valid passport, government ID proof, passport photograph, and medical registration is mandatory if you are from graduate from India. So for this exam, in general, they will ask you around 150 multiple choice questions, and the time is for 3 hours. In general, they will ask you the 50% you need to score. So there is a basically in these 150 questions, they will give you the mark like 0 to 500 scale basically. So if you score 250, then you are passed the exam. There is no negative marking for this exam. And we will provide you coaching for around 4 months, 3-month coaching, then divisions. So easily you can crack this exam. And once you've done this, then you are eligible to apply PR visa, permanent visa, 190, 186, 189, all those visas. And these are work visas you are eligible to apply. And these are some of the media coverage in India, especially recently in Hindustan Times also published about academically. There are also News Nation recently published for one of our exam.
and this is in Australia, SPS Punjabi, coverage regarding about me. So these are some of the program highlights, and here are the fees. Our team will give you the more information. We have a scholarships currently for this AMC program. So you can talk to them. And here we also provide a financial loan with zero interest rate. Okay, this is only for Indian citizens. Basically, this is the Eduvans is a company in India. So this is our partner. Basically, they will provide the loan. Okay, so easily you can talk to our team if you need any assistance for finance. Also, we can help you. Here are some of the reviews from the students. Yeah, so these are the things for us, and yeah, thank you. So we can talk one basically now. So please ask your doubts if you have any. Yes, Harish. Hi, sir. Sir, basically, I have two doubts. Yes. Sir, what is the role of JMO? Can you please elaborate it if I am coming there in In fresh very grad? simple, in India, when we are just complete MBBS, then we have to do 1 year internship, right? So in Yeah, that during internship, or we can also say like CRI, right? yeah, So in that you are not eligible to prescribe or give any treatment. So you have yeah. to give a treatment under supervision of any like any lecturer, or maybe there is any PG student is there, right? Yes, sir. Same like here. Here you have to do perform the things, but under the supervision of a registered doctor. Okay, sir. Sir, and one more thing is, I wish right now I am doing my internship in India. I have cleared my FMG and doing my internship. After I complete this, I need to come there and start do my internship again. Is that No, 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 no. possible to get internship? No. Internship not needed. This is like residency you have to do. This is for everyone. Even someone is graduate from AIMS India, for example, or any other medical college in India. They Okay. also need to go the same. Even if they are they are a MD or MS also, they also need to go to the for the same. Okay, because you don't know about the system in Australia, how to work here. In that Yeah. mandatory, but it is a job. You are getting Okay. salary paid around 120 around 110,000 dollar, $110,000. This is very good Okay. salary, I can say. Very 5 lakh के आसपास, you can earn per month, while you are doing this. Okay, sir. Thank you. Yes. Any other question and doubt? Yes, Niharika. Uh, Hi, sir. Good evening. Yes. Good evening, Niharika. Sir, I'm from India. I'm doing my internship right now. So I Mhm. want to do my post graduation in Australia. So what would be the process? I mean, like after completing my residency, what should I go through to do my post graduation in Basically, Australia? in Australia, if anyone want to do, basically, post-graduation like a two type, as you know, like clinical or non-clinical. So if Yeah. anyone want to do a non-clinical, for Okay. example, maybe anatomy, physiology, pharmacology, public health, X, Y, Z here and there, right? So for Okay. that, directly you can do after MBBS. There is no need to write any exam. But if you want to go for any clinical side, maybe like pediatrics, obs and gynae, surgery, medicine, X, Y, Z, right? So in Mhm. that case, you need to pass this AMC part 1 and part 2, and you need to get general registration, and Okay. then after that you have to a specialization. Okay, sir. Means that after you get registration, then you have to apply in which branch you want. Okay. Hi, Gita. So, if we do our MS from India and then if we have to practice there in Australia, then we have to write AMC for step one, step two, and then we can directly practice there, right? Like if we do MS in neurosurgery, Yes, then we understood. This is a very common question. Those are doing, in India, like MS or MD, like your PG degree, जिसने किया है mm, इंडिया में, तो उनको एक क्वेश्चन रहता है basically, they want to ask that कि sir, do we need to write this AMC
or is there any other pathway for us, because we are a PG degree holder, right, after MBBS? So there is a two things. One is that theoretically you are eligible to apply another pathway called specialist pathway. Okay. So for in that case, no need to write this exam. But in general, in practically, they are not given to any Indian medical grad. I don't see anyone. They only give someone have at least 8 to 10 year work experience. For example, you did your MD or MS in any branch in India, and someone is working clinically, or the service experience. So yeah, and they publish some publication, or maybe might be they are involving in teaching also, and they supervise some students. So there is a very strong CV. In that case, you can go to specialist pathway. Otherwise, those are basically recent MDMS. Definitely, like जिनको 5 साल up to 5 years, those have experience. They in generally they have to go for AMC Part 1 and Part 2. Even our own lecturer, this is Dr. Swapnil Sharma. She is also MBBS MD graduate from Pune Medical College. So she also went for the same AMC Part 1 and AMC Part 2. Okay, because she have only like around 4 years experience in India. So she did not get for that. So she went for this AMC Part 1 and M2. Okay, Ankita, I think I clarify, or you? Yes, sir. My doubt is clarified. But like I'm doing my MS in neurosurgery, so I want to write my AMC Part 1 and AMC Part 2, and then I can directly practice in Australia, in any medical hospital or anything. That Yes. I'm asking. Basically, if you are doing PG, so if you just pass Part 1, in fact, you will get job definitely. Since you are you done your PG, so आपको just first part अगर आपने clear कर लिया plus English, then you just start looking a job as a RMO, resident medical officer. You will get the job and come to Australia, and simultaneously you practice here, earn money, and then you can write this Part 2. And once you complete this Part 2, then again you have a chance if you want to do some specialization in Australia. So, but then it will be costly, like after MS, you can do MCH in neurosurgery. MCH. Yes. But see, here is mostly in the free at the time. For you will get the PR visa, then you will consider as a local Australian. Okay, If someone, so if someone applying now, for example, then they will consider as an international candidate, and in that case, you need to pay very high fees. okay. Like after MS, I can do free MCH in Australia. नहीं, आप बात ही समझे। अभी क्या करना है, आप अभी आप इंडिया में MS कर रहे हो, MS राइट? करती हूँ, हाँ, हाँ, न्यूरोसर्जरी में सर। थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर। सर फर्स्ट ईयर में अभी 3 साल बाकी, अब 2 साल और बाकी है। ओके, मैं समझ गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इफ यू जस्ट क्लियर EMC Part 1, ओके, जी, एंड फिर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू आपका अपना MS करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है तो आपको बाद में आ सकते हो, कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया MS, उसके बाद ही आपको यहाँ पे आना है, अगर सेव आपको लगा तो कर सकते हो आप लोग। आपको यहाँ पर डायरेक्टली जॉब मिल जाएगा, बिकॉज आपकी ऑलरेडी MS किया हुआ है एज ए RMO। तो आपने फिर से वही AMC Part 1 Part 2 पास करना है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अगेन आपको यहाँ पर सेपरेट स्कूल होता है बेसिकली, वहाँ पर एप्लीकेशन करनी पड़ती है वहाँ पर हर एक के लिए। यहाँ पर इट इज नॉट लाइक इंडिया में जैसे कि अपना नीट PG होता, तो पूरे इंडिया का नीट PG होगा और फिर उसकी बेस पे आपकी मार्क की बेस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, राइट, इन जनरल। जी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ईच यूनिवर्सिटी हैव देयर ओन क्राइटेरिया। मोस्टली यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या करती है, जनरली वो आपके मार्क्स देखती है और एक्सपीरियंस CV देख के वो आपको एक इंटरव्यू करते हैं, इन जनरल वो फिर एडमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नेशन वाइड कोई एग्जाम नहीं होता यहाँ पर, मतलब PG के नहीं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ओके अंकिता। हेलो। यस मैम। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर पासिंग AMC2, like how long it will take us to get into like specialization? Basically, once you pass AMC2, then you have to apply general registration. Okay. Once you got registration, then you have to now apply for PG. Okay. अब
PG, it may take, very branch to branch, minimum 3 year, maximum 6 year. Okay, but in general, they give basically super specialization. For example, if someone want to go for internal medicine, Yes, okay, sir. internal medicine generally 4 years they go for 3 years PG, then 1 year specialization. You want to go like diabetology or cardiac, kind of things. तो 4 साल या 5 साल 6 साल का तक यहाँ पर होता, but you will get the salary paid for that. This is not you are not a student basically. आप Like लोग after AMC, we have to give any separate exam to get the desired branch? no not separate. यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है फॉर एग्जांपल, उनके हॉस्पिटल में होता है ये प्रोग्राम, ठीक है। Yes, sir. तो आपको ये एक यूनिवर्सिटी और है, मतलब 5 यूनिवर्सिटी है XYZ, तो पांचों को आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। ओके, Okay, तो sir. यहाँ पर कोई सिंगल टेस्ट नहीं होता जैसे इंडिया में नीट PG होता। तो यहाँ पर Okay, sir. उनका हर हॉस्पिटल का या हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। तो मैक्सिमम का क्या होता है, ये लोग जस्ट आपका CV देख के, आपका एक्सपीरियंस देख के और आपको इंटरव्यू दे के एडमिशन दे देते हैं। Okay, sir. और कुछ लोग क्या करते हैं, भैया एक रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं, ऐसा Okay, होता है। Okay, sir, but one more question. After AMC1, what visa we have to apply to go there? बेसिकली वर्क वीजा इन जनरल, तो क्योंकि आपको जो है अभी अभी आप वर्क वीजा पे आ रहे हो 1 साल 2 साल के लिए, और आपको ये जैसे आपने पार्ट 2 कर लिया, AMC पार्ट 2 पे जाओगे आप, अदरवाइज आप बेस्ट आपको नहीं कह रहेगा, आप जाओ WBA पे, वर्क विद असेसमेंट में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको जॉब ही होती है वो 12 महीने की, साथ में आप वो कर लेते हो असेसमेंट। तो असेसमेंट में क्या होता है WBA में, जैसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आपने MBBS में जब आपने इंटर्नशिप की होगी, लाइक कि भाई 2 महीने ऑप्शन गायनी में, या 2 महीने पेडियाट्रिक्स में, या 2 महीने जो है ना Yes, sir. इंटरनल मेडिसिन फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर वैसे होता है 45 डेज का एक वो रहता है, रोटेशन रहता रहेगा आपका, मिनिमम जो है 4 to 6 बेसिकली डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो वो 45 डेज में एक आपको मेंटर होगा और वो आपको ऑब्जर्व करेगा 45 डेज में आपने क्या किया। इन जनरली बेसिकली क्या देखते हैं लोग कि आपने कुछ परफॉर्म, फॉर एग्जांपल आपने कुछ लाइक स्टिचिंग करना आपको आता है नहीं आता, या आपने कोई IV कोई इंजेक्शन लगाना है, उस टाइप की छोटी छोटी चीजें यहाँ पर देखी जाती है तो उसमें, और उसमें करीब 99% स्टूडेंट पास करते हैं उसमें कोई बच्चा फेल नहीं करता। अदरवाइज आपने कोई बहुत बड़ा कुछ लाइक कि आपने ब्लेंडर कर दिया हॉस्पिटल में, आपसे कोई खुशी नहीं है उस हॉस्पिटल के अंदर, और उस हॉस्पिटल में जिस वार्ड में आप रहोगे तो उस वार्ड के अंदर अराउंड 10-12 लोग जो भी होते हैं, जैसे नर्सिंग का सुपरिटेंडेंट होगा, जो आपका HOD होगा वहाँ पर, और जो आपका मेंटर होगा, तो ये सारे लोग रैंकिंग देते हैं अपनी असेसमेंट करते हैं कि हाँ भाई इसका भी ये होता था और शी वाज वेरी नाइस दिस एंड दैट तो वेरी इजी टू पास दैट WBA। तो जैसे आपने AMC पार्ट किया तो आपको जॉब ढूंढनी है RMO की, और वो आपको सिर्फ वर्क वीजा पे इन जनरल बुला लेते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं यहाँ पर आने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, ये कोई छोटे मोटे कोर्स लेकर आ जाते हैं नॉन क्लिनिकल वाला, फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ लेकर आ गए। तो पब्लिक हेल्थ बहुत ही सस्ता कोर्स होता है, अराउंड 6-7 लाख रुपए का वो पर सेमेस्टर का उसका फीस रहता है, और वो आ जाते हैं, फिर जॉब ले लेकर ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग, और फिर यहाँ पर जो है पार्ट 2 क्लियर करते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। हाय अभिषेक। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन सर। सर मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि AMC1 के बाद में आप वहाँ फेलोशिप कर सकते हो और उसका पेएबल होगा, फेलोशिप नहीं, मैंने कहा जॉब कर सकते हो आप, तो वो हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो और वो पेएबल होगा। तो भैया अगर हम, ऑस्ट्रेलिया में कुछ फ्री कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब चीज पे ही होती है। तो सर जैसे हम हॉस्पिटल में 3 साल या 4 साल जो भी होता है फेलोशिप होती है कि वो 3 साल जो 4 साल होगी जो? अच्छा, वो तो बेसिकली PG की बात कर रहे थे बेसिकली कि आपको कोई सुपर स्पेशलाइजेशन करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है आपको। जैसे आपने AMC पार्ट 1 पार्ट 2 पास करेंगे आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जनरल का, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, आपको किस में प्रैक्टिस करनी है, वही मेडिसिन में करनी है, सर्जरी में करनी है, पीडियाट्रिक में करनी है, या साइकेट्री में करनी है। तो उन सब में जो है मिनिमम 3 to 6 ईयर तक कोर्स रहते हैं तो वो आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। इवन ये GP जो बनते हैं ना यहाँ पर, उसका भी स्पेशलाइजेशन है, बेसिकली फैमिली मेडिसिन उसको बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है सर। और सर ये जो आप फर्स्ट बता रहे हो AMC फर्स्ट एग्जाम, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रोपैथो, फार्मा? भाई सभी आएंगे, बेसिक क्लिनिकल जो है ना, बेसिक तो हर जगह रहेगा, है ना, लाइक जो हमारा जो फार्माकोलॉजी है या फिजियोलॉजी है, और इसमें क्लिनिकल दोनों मिक्स आते हैं बेसिकली। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया नहीं है, मतलब सब कुछ पूरा आएगा जितना भी है?
5 ईयर हाँ, MBBS बेसिकली हमने आपको ऐसा प्रोग्राम बनाया है 4 मंथ में आपको एनफ हो जाएगा, हम आपको सारा रिसोर्सेज एवरीथिंग विल गिवन टू यू, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वो दिस एग्जाम आई कैन से इजियर देन नीट पीजी जो आप कर रहे हो। इंडिया में जो नीट पीजी करते हैं स्पेशली जो क्लिनिकल ब्रांच के नहीं है, उससे इजियर एग्जाम है ये, और इसका पासिंग 70% तक बच्चे पास करते हैं इसको। सर मैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फॉरेन से MBBS करी है। मैंने Basically, जो वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी जो होती है ना, उसमें अगर आपके मेडिकल कॉलेज का नाम है, जैसे फॉर हाँ सर, एग्जांपल रशिया से चाइना से किया फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ या यूक्रेन से किया किसी ने, तो उनके अगर ठीक है। कॉलेज का नाम है उस लिस्ट के अंदर, हाँ देन यू आर एलिजिबल। हाँ सर, मेरा उसका नाम है। तो मेरे को फेलोशिप इंडिया में भी होनी चाहिए क्या, मतलब इंडियन लाइसेंस भी होना चाहिए क्या उसके AMC के एग्जाम के लिए? नहीं, बेसिकली इसमें अब दो चीजें होती हैं कि वंस यू कंप्लीटेड योर MBBS फ्रॉम रशिया फॉर एग्जांपल, चाइना, XYZ, ओके, इफ यू कंप्लीट देयर इंटर्नशिप, अगर आपने वहाँ इंटर्नशिप कर लिया था और आपको डिग्री कंप्लीट हो गया, देन नो नीड। बेसिकली FMGE इंडिया में बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं और उसकी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो नो नीड टू गिव दैट FMGE एग्जाम, नो नीड रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। आपकी अगर का नाम अगर उस लिस्ट में है तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। सर मेरा FMGE इस बार हुआ है, इस बार ही दिया था मेरा एग्जाम, इस बार हुआ है। तो मेरा इंटर्नशिप अभी चल रहा है, तो 2 साल का इंटर्नशिप होगा मेरा। तो वो 2 साल का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के रूप में होगा वहां पर जब मैं प्रेजेंट करूंगा। हाँ, बेसिकली इंडिया में जितने भी जो इवन जो इंडियन MBBS वाले भी, उनका भी एक्सपीरियंस 1 साल काउंट करते हैं वो लोग। तो वो जो इंटर्नशिप होता है वो एक्सपीरियंस के लिए काउंट किया जाता है? यस। ओके सर। और सर ये प्रोसेस का सब कुछ फॉलो करना और ये सब कुछ कोई गाइडेंस के लिए एकेडमिकली हेल्प करेगा ना? यस, ये सब हम कराएंगे आपको। इवन वी विल आल्सो हेल्प यू, इवन जो हमारे लेक्चरर जो है ना, वो खुद ही आपकी तरह यहाँ पर आए, वो खुद ही इंडियन है। वो कैसे आए, वो विल आल्सो हेल्प दिस इज नॉट जस्ट एकेडमी क्या करेगा। जो लेक्चरर है वही आपको पूरा हेल्प करेगा भाई कि एग्जाम इज नॉट जस्ट द एग्जाम, यहाँ पर जॉब किसमें होती है, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करता है, CV कैसे बनाना है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो सारी चीजों में हम लोग हेल्प करते हैं अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग। सर ये ऑफलाइन कोचिंग होगी या फिर ऑनलाइन कोचिंग होगी? अरे भाई ऑफलाइन काम, फैकल्टी हमारी ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? नहीं, क्या पता आप बड़ी बड़ी सिटीज में जैसे दिल्ली मुंबई लगा रखे हो ऑफलाइन भी करवाओ। यहाँ तो थोड़ी नहीं है जाएगा वो फैकल्टी, लोकल फैकल्टी नहीं है। हमारी फैकल्टी ऑस्ट्रेलियन फैकल्टी है, ठीक है, जिसने ये एग्जाम पास किया है वही बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाएगा, जो इस जर्नी से यहाँ पे आया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑनलाइन हमारा बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन है और हमारा जो LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन और iPad और टैबलेट, कुछ भी आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो क्लास, और लाइव क्लास लेते हैं हम लोग। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, नेक्स्ट प्लीज। Yes, Akash. Hello. Yes, Sai Prasad. Hi, sir. I'm Dr. Sai Prasad. Yeah, I have one small doubt, sir. Actually, I am finished my MBBS in Philippines. After that, I wrote my license exam. I passed that one in 2021, and after that, I joined in government sector, medical officer. Okay. Since 1.5 year, I am doing that job. Is this enough for recent? I mean, clinical gap I mean, you don't for experience have, certificate. Yes. ये आपको this is basically currently what you are doing. If you are currently working in your own field, definitely is a good chance Sir, for you. currently I am doing as a medical officer in PS. Yeah, medical officer na? Medical officer in PhD or CHC, Yes, sir. right? Yes, so you are doing practice basically. Yes, sir. I am doing it. हाँ, तो वो this experience will count. This will help you definitely. Is this enough to apply for job after the end? Yes, that's what I'm saying. Yeah. You are working. This is currently is enough. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, next please. Hi, sir. Good evening. Hello, Hi, sir. Kansha. Sir, what is the procedure for work-based assessment? Procedure means you're asking.
for work-based assessment? है तो उसका प्रोसीजर यही है कि आपने जैसे वंस यू पास AMC पार्ट 1 then you have to find a job in that hospital, especially the 19 hospital, and you have to apply for that. So every year they ask the application. Those are pass English plus AMC part 1, they are eligible to apply. And work assessment about generally for 1 year में complete होता है assessment जो है, and the fee they will charge around 10 to 12,000 total for work-based assessment. And so there is around 6 different departments. You have to work there, and they will see your work-based assessment. They will done, and all will give the report, and you will pass then, and directly you can apply for your general registration. So that's all is called the PBA program. And sir, after AMC Part 1, how can we apply for job from India? Online, I mean, it's very common. As I already give you this several links here, so if you go here, I can show you basically, maybe. Just give me a sec, okay, guys. So I'm going to show you that how you can find a job in Australia after you pass part 1, okay? Are you able to see this screen? Junior Medical Officer Training Program. Okay. So there is a rural junior medical officer training they are asking. This is the government of Australia basically. I'm not asking to anyone private hospital. The government itself is hiring. So these are the agencies they are hiring. Okay. So this is like Canberra Health Services. So Canberra is the state of or the capital in Australia. So they are hiring, and they are hiring in New South Wales here and there, and Victoria they are hiring. So these are a lot of jobs are available. So you have to just click and see. So once you pass, even they give email ID. So once those are passed, they can apply. So you can apply for it. So basically for the international candidates only. Another you see, this is like international and junior medical officers. जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए ही दिस इज गवर्नमेंट ऑफ NSW hiring. Okay, so the 3rd October is the date you can apply. So yearly 2 times they ask the applications from the candidates. And they are saying you can apply from here. So these are the things you just apply online only. This is like this international medical officers. A lot of jobs basically, how to apply, campaign date, this and that. You can find a lot of information here itself. These are the government website. I'm not talking about the private hospitals. These are the government. Private also hire a lot basically. So once you pass this exam, then you start looking a job as a junior medical officer or right-hand medical officer. Yes, Dhruv Joshi. Hi, Dhruv. हेलो सर. Yes, Akansha. सर मुझे ये पूछना था कि अभी मैं फिलीपींस पे मेडिसिन कर रही हूँ और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं. सो हमको यही जानना था कि रिसेंटली NMC ने हमारा डिग्री इनवैलिड किया है, तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या AMC एग्जाम के लिए?
मतलब इनवैलिड किया है आपका डिग्री क्यों? हाँ सर, लाइक 2019 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका इनवैलिड कर दिया गया है फिलीपींस का डिग्री, बट अभी अभी भी बात चल रही है ये कोर्ट पे। तो हमें बस इतना जानना था कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये स्पेसिफिकली अगर अगर आपके मेडिकल कॉलेज का उस लिस्ट के अंदर नाम है तो हाँ वर्ड सर। जो एजुकेशन डायरेक्टरी होती है उसमें अगर आपका नाम है देन यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे इंडिया का तो पता नहीं कि उन्होंने वैलिड किया इनवैलिड किया, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए यू कैन अप्लाई। यस सर। सर अगर हमारा यूनिवर्सिटी उसमें नहीं आता है वो लिस्ट पे, तो हम लोग ECFMG में जाके उधर से हम लोग मतलब वो कर सकते हैं क्या? टेस्ट करना पड़ेगा उनको, और फिर वो बेसिकली यूनिवर्सिटी जो आपका कॉलेज है वो वहां से करेंगे रिक्वेस्ट। दिस नॉट ओके कैंडिडेट नहीं कर सकता, कॉलेज अप्लाई करेगा उनके लिए अप्रूवल के लिए। सर, ये अप्लाई करने के लिए उनको क्या बताना चाहिए हमें कि क्या करना वहाँ होगा? पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है वहाँ पर, आप उनको बता सकते हो यहाँ पर नो कि उनको कॉलेज का लिस्ट में नाम होना चाहिए नो। तो आपके कॉलेज का नाम नहीं है कि उस लिस्ट के अंदर? अभी वो वर्ल्ड डायरेक्टरी लिस्ट पे शायद अभी नहीं है, तो हमें लाइक EFM, अगर हम लोग पहले USA में लेके सोच रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे कि हो गया या फ्लैब हो गया या ऑस्ट्रेलिया होगा, इन सब में फर्स्ट स्टेप होता है नो एपिक वेरिफिकेशन या ECFMG जो होता है ना। हाँ तो सर। उसी में ही वो नाम होना मस्ट है, अगर नाम नहीं है तो आप कहीं के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, whether it is US or UK. We are basically launching the next month for USMLE and PLAB also. ओके सर। We are working basically, but उसका किसी भी एग्जाम का फर्स्ट स्टेप तो वही होता है, एपिक वेरिफिकेशन आपको करानी ही पड़ेगी। तो आपके कॉलेज को आप क्या करो, आप वहां से उनको बताओ कि भैया यहाँ पर आप अप्लाई करो, 2-4 महीने में फिर उनको मिल जाती है वो अप्रूवल। अच्छा, अगर सर कॉलेज फेल ये कर नहीं पाती है तो हम लोग एक्स्ट्रा से खुद मतलब सर्टिफाई कर सकते हैं क्या? No, 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 you can't. आपका कॉलेज को वेरीफाई, this is they will not give any individual person, they are given to the college or university approval. तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करेगी उसमें, वो इसी की नहीं करेगी है ना। क्या आपने नहीं किया आपको नहीं करेंगे वो एंटरटेन एज ए स्टूडेंट। ओके सर, थैंक यू। यस नेक्स्ट प्लीज। Sir, like, मतलब good morning, good evening first of all, and secondly sir मेरा question ये है, like मैं यूक्रेन में पढ़ रही थी पहले और अभी मैंने ट्रांसफर ले लिया वॉर की वजह से जॉर्जिया में। So will this transfer hamper in the epic verification of documents? आई डोंट थिंक सो, बेसिकली अगर आपका नाम वहाँ पे है लिस्ट में, बिकॉज जो आपको फाइनल डिग्री होगी ना वो जॉर्जिया देगा आपको, राइट। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जॉर्जिया जी सर। का अगर उसका कॉलेज का अगर नाम है उस लिस्ट के अंदर देन यू आर एलिजिबल। ओके एंड सर सेकंड क्वेश्चन वाज लाइक आपने बताया कि जो WPA सिस्टम होता है वो मतलब WPA कर लोगे तो आपको तो हमें AMC2 भी देना पड़ेगा या WPA इज एनफ फॉर अस? AMC2 नहीं देना पड़ेगा, वो ओके मतलब AMC2 के लिए बाईपास करने के लिए WBA प्रोग्राम है, वर्क बेस्ड करेंगे। जो आप काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल कोई आपको हाँ इंजेक्शन जी। लगाना आता नहीं आता, कि आपको IV ड्रिप देना आती है या छोटा मोटा आपको प्रोसीजर करना आता है, तो वो सब थोड़ा सा वो देखते हैं, तो उसमें आपको AMC2 नहीं करना। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये जब हम लोग को PR अप्लाई करना है तो उसके लिए AMC2 देना पड़ेगा या WA देना पड़ेगा या दोनों देने चाहिए? दे नीड फुल रजिस्ट्रेशन, ओके वेदर इट इज आपने AMC2 के थ्रू गए हो या आपने WBA के थ्रू गए हो, आपको रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगी ना। ओके, सो एटलीस्ट वी हैव टू गो फॉर फुल रजिस्ट्रेशन। यस, वेदर वो आप किसी भी पाथवे से गए हो, WBA से गए हो या आप इसके थ्रू गए हो, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। इवन यू नो सम टाइम इवन इफ यू गॉट दिस RMO जॉब, ओके सर, उस टाइम पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो ना, अगर आपका असेसमेंट हो गई है तो। ओके सर। सर, कुड यू एक्सप्लेन मी अबाउट द टैक्स सिस्टम सर? टैक्स सिस्टम इज लाइक सेम लाइक इन इंडिया, जितनी अर्निंग है इतनी टैक्स देना है, तो उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा। अगर आप 2 करोड़ अगर अर्न करो, डेफिनेटली आप हाई टैक्स लगेगा है ना। यहाँ पर भी जो है वही सिस्टम है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें फ्री होती हैं। यहाँ पर इतना खर्चा होता नहीं है, सिर्फ सब्जी वब्जी का खर्चा होता है, घर का किराए का खर्चा होता है यहाँ पर। अगर आपका अपना घर है तो फिर कोई खर्चा ही नहीं है यहाँ पर। ओके, एंड जो सब्जी वगैरह तो जितनी इंडिया में लगता है कि कॉस्ट से, मैं अभी इंडिया गया था लास्ट मंथ अगस्त में, मैं अभी आया हूँ या 2 महीने रह हुआ हूँ।
मुझे लगा कि साला यहाँ के बराबर तो कॉस्ट इंडिया में ही हो गई है आजकल हर चीज की। ओके, बट इन थैंक जनरल यहाँ पर जो है 18 से लेके 40% तक टैक्स लगता है। अब जो 40% टैक्स उसी को लगेगा जिसकी हाई सैलरी है। बट ऑन एन एवरेज जिसकी अगर सैलरी 100 के 120 तक है तो उसको जी। करता है 18 से 28 के बीच में। और ये आज तो डिपेंड करता है कि आपकी वाइफ काम करती है नहीं करती है, आपके कितने बच्चे कितने डिपेंडेंट है आप पे, तो उस ओके केस में आपको टैक्स कम भी लगता है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं टैक्सेशन पे, नॉट जस्ट कि भाई आपको इतना फ्लैट काट देंगे वो। जी सर, थैंक यू सर। Good evening, sir. हाँ प्रत्येक Sir, I have did my MD recently, MD in psychiatry. I'm currently working as senior resident in India only. So, like, if I would clear my AMC one and go to Australia, then what would be my like positions? हाईएस्ट डिमांड जो सबसे ज्यादा बेसिकली इंडिया में जो है ना, लोग साइकियाट्री में जाते नहीं है। मुझे पता नहीं इतना कोई वहां पर जो है इतना शायद डिमांड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत डिमांड है। यहाँ पर ये गोरे होते हैं साले पागल रहते हैं आगे आगे ये साइकियाट्री का यहाँ पर इतना डिमांड है, साइकियाट्री का बहुत हाई डिमांड है यहाँ पर। मैंने शायद एक वीडियो भी Yes. बनाई थी, मैंने बताया था कि इमरजेंसी मेडिसिन और साइकियाट्री इन दो में ये गोरे जाते नहीं है। और जो IMG से उनकी हाई डिमांड रहती है उधर। तो अगर आपने साइकियाट्री MD ऑलरेडी कर लिया और आपने EMC पार्ट 1 भी कर लिया ना, तो मेरे Okay, हिसाब sir. से बहुत ही हाई चांस लगेगा आपको RMO की जॉब लग जाएगा यहाँ पर। Okay, sir. So I have to work as RMO. Okay. So यस इनिशियली, बिकॉज RMO के बाद में आपको पार्ट 2 भी क्लियर करना है। मैं बोल रहा हूँ आपको जॉब लग जाएगी आप ओनली MCQ के बाद ही, जो आपका पार्ट 1 के बाद ही आपको जॉब लग जाएगी। ओके ओके। और अगर मैं पार्ट 2 दोनों करके आऊँ तो फिर मेरे को क्या जॉब मिलेगा वहाँ पे? फिर मैं मतलब फिर बेसिकली फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने पार्ट 2 भी कर लिया, फिर आपको बेसिकली फिर आपको वही जाना पड़ेगा, आपको वो करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है आपको। फिर से अगर साइकियाट्री में करनी है तो उसको साइकियाट्री में आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, बिकॉज यू ऑलरेडी। तो मतलब आई हैव टू डू माय MD अगेन, मतलब ये MD वैलिड नहीं रहेगा? नहीं, ये बैड नहीं रहता यहाँ पर वैसे मास्टर डिग्री नहीं बोलते यहाँ पर। वर्क पे डिपेंड करता है कि 3-4 साल यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम कराते हैं, और यहाँ पर वैसे रेजिडेंसी बोलते हैं उसको, है ना, या फेलोशिप काइंड ऑफ थिंग होती है यहाँ पर। वो सिस्टम नहीं है जैसे अपने इंडिया में कि 3 साल MD कर लिया या MS कर लिया और बंदा वो स्पेशलिस्ट बन गया। तो मतलब फिर मेरे को लाइक जैसे इंडिया में होता है पूरा एग्जाम देना पड़ेगा, थीसिस करना होता है, वैसे ही करना पड़ेगा क्या? सेम मगर आपको पैसे मिलेंगे ना। आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे रहा है और बोला भाई 1 करोड़, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है उसमें करने में? तुम बोलोगे भाई ठीक है मैं तो आराम से करती रहूंगी, 400 की जगह मेरे को तो 5 साल में करा दे। इंडिया में इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं ना, राइट? तो इसलिए लोग जो है 3 साल में खत्म करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज का एक सिस्टम है बेसिकली, और इसलिए यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं, और साइकियाट्री में लोग जाते नहीं है। साइकियाट्री में इतनी हाई 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 चांस रहते हैं कि मिलने के IMG को स्पेशली। तो आपको सेम जो कोर्स है पूरा 4 साल का वो करना पड़ेगा यहाँ पर। और इसमें ओके, 4 इयर्स के लिए वापस MD ही करना पड़ेगा मेरे को? यस, यहाँ MD नहीं बोलती है, MD/MS का कंसेप्ट नहीं है यहाँ, उसको फेलोशिप बोलते हैं ना, फेलो बोले बनेंगे आप ओके, 4 इयर्स का फेलो करना रहेगा? यस वो साइकियाट्री में करना रहेगा फेलोशिप? यस, अगर आपको उसी में करना है तो, पर जैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको बहुत इजीली आपको मिल जाएगी उसके अंदर। ओके, तो उसमें जैसे डिफरेंट एक ही हॉस्पिटल में करना रहेगा ना फॉर कंटिन्यूअस 4 इयर्स, और इट कीप्स ऑन चेंजिंग कि सेंटर भी आपका चेंज होता है फॉर? ये चेंज हो सकता है बेसिकली हर एक हॉस्पिटल का या हर एक यूनिवर्सिटी के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे आपको पता है एम्स दिल्ली है, उसका एक हॉस्पिटल, तो वहाँ बहुत सारे उसके रूरल एरियाज में भी उसके हॉस्पिटल्स उसके अंडर में रन होते हैं, राइट? तो जितने भी होते हैं वो लोग वहाँ भी जाते हैं कुछ टाइम के लिए, राइट? तो ऐसे ये लोग भी भाई हमारा हॉस्पिटल एक यहाँ पर है, ये रूरल हॉस्पिटल है, वहाँ कुछ टाइम वहाँ पर बता के आओ, है ना। और इन जनरल एक कंडीशन होती है क्योंकि इनको डॉक्टर तो चाहिए, मगर डॉक्टर इनको रूरल एरिया में, रीजनल एरिया में, क्योंकि वहां पर ही शॉर्टेज है। तो और जाने का एडवांटेज ये मेरे हिसाब से, तो हाई इनकम सैलरी मिलती है और एक्सपेंसेस बहुत ही लो होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई सेविंग आप लोग कर सकते हो। और बिल्कुल यहाँ सिटीज बिल्कुल पूरी खाली होती है बेसिकली, यहाँ इतनी पॉपुलेशन है नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। यस सर। ये ओके, तो मतलब ये प्रेफरेबली हमको रूरल एरिया में पोस्टिंग करेंगे? यस। ओके, एंड दे आर मतलब इनिशियल डेज में जो आपको PR मिल जाती 2-3 साल के बाद, फिर आपको आना है तो आप आ जाओ, फिर कौन मतलब वो कर रहा है, मतलब इनिशियल डेज में मैं बता रहा हूँ आपको ये। ओके, आफ्टर PR आप कहीं पे भी रह सकते हैं? हाँ। ओके,
मतलब ये Okay, लगाओ 2-3 साल जो आपके इनिशियल लाइफ रहेगी वो रूरल में रहेगी, और रूरल यहाँ Okay. के ऐसे इंडिया वाले रूरल नहीं है। यहाँ अगर Yes. 2000 लोग की पॉपुलेशन है तो वहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी, मतलब छोटा मोटा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पर उसके लिए, और हॉस्पिटल होगा छोटा मोटा, स्कूल के लिए स्कूल, मतलब बच्चों के लिए स्कूल होगा, नहीं एवरीथिंग आपको पूरी मिलेगी वहाँ पर। Yes, वाईफाई, sir. 5G, इलेक्ट्रिसिटी 24/7, हर चीज की, मतलब जो एक शहर में रहती है वो वहाँ पर भी रहती है। ओके जो मतलब यहाँ पे मैंने 1 साल इंटर्नशिप किया और 3 साल MD किया है और अभी 1 साल SR करूंगी, तो इसका एक्सपीरियंस का कुछ एडवांटेज मिलेगा मेरे को? 100% मिलेगा। इसमें क्या ना, इसमें बेसिकली RMO में 1 to 3 कैटेगरी होती है, तो आपको हाईएस्ट में, मतलब वो बोलेगा आपको सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज उसमें सुपरविजन करते हैं वो लोग जो गोरे डॉक्टर्स होते हैं, है ना। आपको बोलेगा सुपरविजन की जरूरत नहीं क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो आपको बहुत ही हाई चांस रहेगा। इसलिए बोलेगा आपको तो जॉब मिलने में आई डोंट थिंक तो एनी प्रॉब्लम फॉर यू। सॉरी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जॉब मिलने में, आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। जिसने अगर PG कर लिया या जिसने एटलीस्ट MBBS के बाद में एटलीस्ट 6 month to 1 year का जिसने अगर जॉब किया है उसको यहाँ पर। और इंडियंस, एक बात और है, आपको बहुत सारी जगह पे आपको इंडियन ही मिल जाएगा। यस सर। ये थोड़ा एडवांटेज भी कहो या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, बिकॉज कुछ इंडियन जो है ना दूसरे इंडियन को बुलाना नहीं चाहते, वो लगते हैं यार कि यार मैं आ गया, वो आपको बुराई बताएगा, भाई यहाँ मत आओ, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा 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 ऐसा। ऐसे कम होते हैं और होते ऐसे भी हैं, मगर इन जनरल आप बुरा जो होगा आपको ज्यादा हेल्प करेगा एज कम्पेयर टू देसी की कंपेरिजन। ओके सर। और यहाँ पे रेजिडेंसी में जैसे 4 years का फेलो रहेगा, तो एग्जाम एट द एंड ऑफ 4 years होता है जो फाइनल एग्जाम होता है कि एक काइंड ऑफ असेसमेंट होती है कि भाई इसमें जाओगे इतने दिन, इसमें उसमें जाओगे, तो वो जो आपका वो मेंटर होगा वो वही असेसमेंट करते रहते हैं। ओके, तो साथ के साथ असेसमेंट चलता रहता है, कुछ फाइनल एग्जाम जैसा नहीं होता है सर? लास्ट में फिर वो थीसिस वगैरह होती है कि रिसर्च वगैरह कोई एक टॉपिक लेकर आप भी करोगे ना। यस सर। सर आपने उसमें वो किया है, आप इस पे के बोलोगे आप इस चीज पे, तो उसमें वो करना पड़ेगा, चीज तो बनानी पड़ती है यहाँ पर। और यहाँ पर रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंडिया में बहुत सारे आप लोग यहाँ मेरे को लिसन कर रहे हैं, तो अगर आप कोई अगर स्टूडेंट है यार यहाँ पर ईयर 2, 3 और 4 में, तो डेफिनेटली प्लीज रिसर्च, ये इवन स्मॉल रिसर्च, कोई सर्वे ही कर लो और उसको करो, पब्लिश करो, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। वेदर इट इज US हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, यहाँ पर इट इज नॉट जस्ट क्लिनिकल चीजें नहीं देखते हैं लोग, और भी चीजें देखते हैं कि भाई रिसर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो अपनी अपनी फील्ड के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और CV में बहुत ही वेटेज देता है ये, मतलब एडमिशन के लिए जॉब्स में। या अगर आप PG करो तो आपने किसी बच्चे को गाइड किया, फॉर एग्जांपल आपने किसी MBBS वाले बच्चे को आपको आपने गाइड किया, इन जनरल ऐसे करते हैं जो SR होते हैं इंडिया में, राइट। और कुछ आपने उनके साथ में मिलकर कुछ आपने कुछ दिया, कुछ प्रोजेक्ट कर दिया और पब्लिश करो पबमेड इंडेक्स जनरल में। इवन कुछ पैसे भी चार्ज करता है कोई, $100-200-300 इंडिया में, तो पब्लिश करवा लो आप, तो अभी बहुत आपको हेल्प करेगा वो। ओके सर। सर आई हैव वन मोर डाउट कि लाइक मतलब कनाडा में जाने का क्या प्रोसीजर रहता है? अगर आप बेसिकली वो सेम प्रोसीजर, ये कनाडा हो, US हो, कनाडा हो, कहीं पे भी हो, वो सबके 3 स्टेप होते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर एक टेस्ट देना होगा, और फिर इंग्लिश का देना होगा। मगर कनाडा में वीजा मिलना बड़ा टफ चल रहा है, उनकी जो है ना, उनके जो वो स्कोर जो बहुत हाई चल रहा है अभी। ओके सर, तो कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कनाडा के लिए मतलब क्या चाहिए अपने को? अभी हम कनाडा का कराते नहीं, तो मैंने अभी इतना रिसर्च इस पर किया नहीं कनाडा वाले पर, इन जनरल बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग US असेंबली फॉर US एंड UK एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का ही हमने चालू किया हुआ है, हमारा जिससे यहाँ पर आई थिंक 4th बैच चल रहा है यहाँ पर AMC का, तो अभी वो भी हमने किया भी नहीं है, तो इतना आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस कनाडा, मैंने अभी देखा नहीं है उसके लिए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Assalamu alaikum. Yes, Dr. Asim Al-Islam. How are you? I am fine, sir. How are you, sir? Thank you. सॉरी सर, मैं आज वो जैसा कि हमारा फेस्टिवल था तो रास्ते में था, लेट ज्वाइन की मैंने मीटिंग। ओके। तो मैंने एक वर्ड सुना है WA प्रोग्राम, बट आई डोंट नो कि ये क्या चीज थी। अगर जी जी, once you pass AMC part 1, then you need to pass part 2, AMC part 2. But if you do not want to give part 2, so there is an alternative for to bypass this AMC part 2 clinical exam. You can go for WBA. WBA is called
work-based assessment. Okay, so you have to work and for certain hours around 12 महीने को करना होता है, उसके बाद आपको आपकी फ्लूएंसी हो। ओके सर, जैसे मैंने पाकिस्तान में हाउस जॉब किया है 2021 में, 2022 और 23, अब ऑलमोस्ट 2 ईयर होने वाले हैं। तो वहाँ पे फिर इंटर्नशिप अगेन तो नहीं करनी पड़ेगी फर्स्ट स्टेप के बाद? नहीं, इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी आपको। जो है वो बेसिकली जो रशिया सरकार थे जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं की होती। सर मेरे पास एक दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि हमारे पाकिस्तान में सेंटर नहीं है एएमसी का। हाँ, तो आप दुबई जाओगे सिंगापुर। हमें वीजा नहीं देगा वो इसके लिए, एग्जाम के लिए, पार्ट 1 के लिए ऑस्ट्रेलिया? दुबई जा सकते हो। ठीक है। और सर दूसरा चीज ये है कि सोनोग्राफर, मैंने एक प्राइवेट डिप्लोमा किया हुआ है अल्ट्रासाउंड की, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आल्थो के वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तो नहीं है हमारी जो पीएमडीसी है, लेकिन वहाँ पे सोनोग्राफी का कुछ शार्ट सा बता दे क्या तरीके हैं? अगर सोनोग्राफी को बैंड किया हुआ है यहाँ पर, फॉरेनर्स को ले ही नहीं रहे। ओके ओके, अंडरस्टैंड। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, नेक्स्ट प्लीज। Please give us your phone number, email in the chat box so we can connect to you one-on-one. Yes, Shivani. सर एक आप हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, हम विदाउट अप्लाइंग एएमसी just we take a visit visa if we got it and go to Australia and then apply there for AMC, is it possible? Yes, possible है, बगैर तो वीजा ही मिलना बहुत टफ है आजकल पाकिस्तानीज को स्पेशली, और इंडिया में भी कुछ स्टेट को तो वो विजिट वीजा भी नहीं देते हैं, स्पेशली अगर आप यंग हो तो उनको पता होती है आप यहाँ क्यों आते हैं। ठीक है, बहुत yes. मगर अगर आपको मिल जाती है वो वीजा तो आप आगे लिख सकते हो, इज अप टू यू। ओके सर, राइट, थैंक यू। थैंक यू। यस मोनिका। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है मेलबर्न में, और मैं अभी अप्रैल में आके भी गई हूँ मेलबर्न में ऑन विजिटर वीजा फॉर 15 डेज। तो सर क्या इससे मुझे कुछ हेल्प मिलती है अगर मैं एएमसी पास करती हूँ तो जॉब अप्लाई करने में? नहीं, ऐसी कोई जॉब कोई हेल्प नहीं मिली, मगर हाँ अगर वो आपके रिलेटिव में अगर वो हेल्प करा दें किसी क्लिनिक से कहीं से, आपको अगर जॉब ऑफर लेटर दिलवाते हैं तो डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, वो परमानेंट रेजिडेंसी है। हाँ, तो वो अगर हेल्प कर दें तो डेफिनेटली हो सकता है, अगर कहीं से अगर जॉब ऑफर लेटर तो। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है। मेरे हस्बैंड आईआईटीएन है, तो उनके लिए भी मेरे साथ कोई बेनिफिट होगा? नहीं, बेसिकली आप यहाँ तो सिंपल सी बात है, क्या होता है जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस किसने भी किया है, आप वो किसी साधारण कॉलेज से किया हुआ है या वो आईआईटीएन है ना, हाँ जी, वो पीआर की जो लिस्ट है वो सेम एप्लीकेबल रहेगा उनके लिए ना। मगर ये उनको जॉब इजीली मिल जाएगा है ना। इंडिया में सारे लोग जानते हैं कि आईआईटीएन के यहाँ भी बहुत ही हाई डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, और उनका सैलरी बहुत ही हाई, यहाँ पे बहुत डिमांड है स्पेशली जो कौन सी ब्रांच में किया हुआ उन्होंने? सर अभी आईआईटी एमबीए, आईआईटी दिल्ली से एमबीए कर रहे हैं, कंप्यूटर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक की हुई है। ओके, अब तो बिजनेस में जाएंगे वो, तो यार उसकी तो हाई डिमांड रहती है ऑलवेज मगर ये है ना कि आपको ये बेसिकली दोनों में से किसी को पीआर लेना है, मतलब योर हस्बैंड और यू तो आपके केस में थोड़ा सा वो रहेगा, आप आ जाओ या आप स्टडी वीजा पे आ जाओ, आपका हस्बैंड आप डिपेंडेंट आ जाएंगे और वो जॉब मिल जाएगी इजीली आईआईटीएन है। आप अपना एएमसी कर लेना, यहाँ एएमसी अभी आप कर लो इंडिया से। ओके सर, मैंने पर्सनल नंबर दिया है तो मैं आपसे कांटेक्ट भी करूंगी पर्सनली। यस, प्लीज लीव योर फोन नंबर, ईमेल, वी विल कनेक्ट टू यू इंडिविजुअली। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मोनिका। सर एक क्वेश्चन ये है कि नॉन क्लिनिकल जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, जैसे पाकिस्तान में मैं स्टेट लाइफ में मेडिकल क्लेम ऑफिसर पे काम कर रहा हूँ इंश्योरेंस के साथ, हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे दुबई वगैरह में भी इस तरह की जॉब्स होती हैं, और वहाँ जॉब मिलती है जो पीआर होल्डर है, सिटीजन है, जॉब मिलती है जो पीआर होल्डर है, सिटीजन है ना, जॉब तो यहाँ बहुत है।
ऐसा कोई आपको बुलाया ओके कि ओके पाकिस्तान से तुम यहाँ पे आओ ये जॉब करने के लिए? ओके ओके थैंक यू सर। वीजा इशू रहता, वीजा नहीं मिलता इन सब कुछ जॉब्स के लिए। जी यस, किसी का और कोई क्वेश्चन है? Any other question? Or we can finish here if you no one have any question. Maybe some chat. Yes, AMC exam preparation के लिए yes हमारा एक ग्रुप बना हुआ है बेसिकली उस पर इवन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो यू कैन ज्वाइन दैट एंड अनदर गुड इवनिंग सर साइंस yeah, this is for only for MBBS doctors. We are talking about the AMC exam. Yes, in which list you have to check. So just go to Word Medical College directly, So there will be a list. Otherwise, just go to AMC website. वहाँ पर उन्होंने एक दिया हुआ है लिंक और वहाँ से आपको मिल जाएगा. Otherwise, you just leave us your phone number, email. हमारा टीम आपको चेक करके बता देगा. आप अपना खाली कॉलेज का नाम बता दीजिएगा and then they will get back to you, कि आपका कॉलेज का नाम वहाँ पे है नहीं. यस अंकिता, कोई क्वेश्चन है आपका? तौसीफ, आई थिंक आप कोई क्वेश्चन है नहीं, वी कैन फिनिश हियर. ओके सर. Okay, thank you so much guys. Thank you, Thank you, bye. sir. थैंक यू सर। Thank you, bye. हाँ तौसीफ, हाँ मैंने डिटेल्स उठा लिया, सबको मैसेज चला जाएगा अभी थोड़ी देर में.